Now come to the second type of vectors, which are virus based vectors. So a useful feature of any cloning vector is the amount of DNA it may accept or may be inserted before it become unviable. Inserts greater than 5 kb in size increase plasmid size to the point at which efficient transformation of bacterial cells decrease markedly. Thus, bacteriophages or bacterial viruses have been adapted as vectors in order to propagate larger fragments of DNA in the bacterial cells. Cloning vectors derived from one bacteriophage are commonly used since they offer approximately 16-fold advantage in cloning efficiency in comparison with the most efficient plasmid cloning vectors. Bacteriophage lambda is a linear double-stranded phage approximately 49 kb in length. It infects E. coli with great efficiency by injecting its DNA through the cell membrane. In the wild type phage lambda, the DNA follows one of two possible modes of replication. Firstly, it may enter the lysogenic life cycle. Alternatively, it may follow a lytic life cycle. So you know these lysogenic and lytic cycle. लिटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, उसमें रेप्लिकेट किया और सेल जो है वो बर्स्ट हो गया, लाइसिस होगी. लाइसोजेनिक में इतनी प्रॉम्प्टली ये लाइसिस नहीं होती, बल्कि ये जो है वो काफ़ी देर तक जो है कई जनरेशन्स तक ये पीसफुली जो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए रहता है और फिर सर्टनली किसी पॉइंट पे जो है वो लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये दो पॉसिबल वेज हैं लाइफ साइकिल के बैक्टीरियोफेज के. एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फेज डीएनए आर 12 base pair sequences which are termed as cos or cohesive sites. Although they are asymmetric, they are similar to restriction sites and allow the phage DNA to be recircularized. क्योंकि लीनियर डीएनए इनमें होता है तो इनके एंड्स जो हैं ये कोहेसिव साइट्स या कोस साइट्स होती हैं. इन कोस साइट्स की वजह से ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है ये रीसर्कुलराइज या सर्कुलराइज हो सकता है. Phage may be replicated very efficiently in this way, resulting in concatenars of many phage genomes which are cleaved at the cos sites and inserted into the newly formed phage protein heads. Phage lambda has been used extensively in the production of gene libraries, mainly because of its efficient entry into the E. coli cell and the fact that larger fragments of DNA may be stably integrated. For the cloning of long DNA fragments up to approximately 25 kb, much of the non-essential lambda DNA that codes for the lysogenic life cycle is removed and replaced by foreign DNA insert. The recombinant phage is then assembled into preformed viral protein particles, a process known as in vitro packaging. तो ये जो DNA engineer किया गया है इसको फिर preformed जो heads हैं वायरस के उनके अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है और इसी को कहते हैं इन विट्रो पैकेजिंग. These newly formed phages are used to infect bacterial cells which have been plated out on agar. Once inside the host cells, the recombinant viral DNA is replicated. All the genes needed for normal lytic cycle are still present in the phage DNA. क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान लाइसोजेनिक पार्ट के जो जीन्स थे वो रिमूव किए गए थे. लिटिक साइकिल के लिए जितने भी जीन्स एसेंशियल है वो सब वहाँ पे इंटैक्ट रहने दिए गए.
तो इसलिए लिटिक साइकिल तो चलेगा नॉर्मली. So multiplication of the virus takes place by cycles of cell lysis and infection of surrounding cells, giving rise to plaques of lysed cells on a background or lawn of bacterial cells. तो प्लेट के ऊपर जो है पूरा लॉन है बैक्टीरियल सेल्स का, और इस पूरे लॉन में जो भरा हुआ है इसमें किसी एक पॉइंट पे जो है वो ये रिकम्बिनेंट सेल है. तो जैसे ही वो जो है वो रेप्लिकेट करेगा, लाइस करेगा, तो नेबरिंग सेल्स को भी इन्फेक्ट करता जाएगा. और आफ्टर सेवरल साइकिल्स आप देखेंगे कि उस प्लेट के ऊपर, उस लॉन ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक प्लेक बन गया है, जोन सा बन गया है, डिसअपीयर हो गई कॉलोनीज. और इस प्लेक में से आप जो है फिर अपना डिज़ायर्ड जो है डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. The viral DNA, including the cloned foreign DNA, can be recovered from the viruses from these plaques and analyzed further by restriction mapping and agarose gel electrophoresis.